Assalamu alaikum everyone, this is Amir Ovaisi and I welcome again all of you on your favorite channel Easy English by Sir Amir. Before starting the lecture today, if you have not subscribed the channel yet, click on the subscribe button and also click on the ring bell icon so you can also get all updates of this video channel. And today the topic what we have selected, that is called regular and the irregular verbs. Let's start the lecture today. Okay, students, if you remember in the last class, the topic what we started, that was forms of verb. And before learning the forms of verb, we also learned that what the verb is. And everyone knows that a verb talks about action, state, and time. And time means present, past, and future. We also learned two types of verb. One is action verb and one is state verb. But we did not go in detail of action verb. We just learned only two state verb, that was be and have. I'm sure that you must have learned easily and you must have understood very easily. We also learned the forms of verb. We have got a verb has minimum 3 and maximum 5 forms. First form is called base form of verb. Second one is called past tense. Third form is called past participle. Fourth form is called progressive form or verb plus ing, and the fifth form is called present tense. Today the topic what we are just going to learn here, that is called regular and the irregular verb. जब भी अपने स्टूडेंट्स से मैं आमतौर पर पूछता हूं कि रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब क्या होता है, तो लोग ये समझते हैं कि शायद मैं उन वर्ब्स की बात कर रहा हूं जो कि रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल होते हैं, उनको रेगुलर वर्ब बोलते हैं, और जो ऐसे वर्ब जो कि आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होते उनको इररेगुलर वर्ब बोलते हैं. तो ये यकीनी तौर पे गलत आंसर है. तो इस सवाल का जो है हम अब देखते हैं कि जवाब होना क्या चाहिए. आप लोग में से किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं और इररेगुलर वर्ब क्या होते हैं? चले जी, कोई मसला नहीं. हम आपको इस चैनल के जरिए आपको इजी वे में पढ़ाते हैं, क्योंकि इस चैनल का नाम ही इजी इंग्लिश बाय सर आमिर है. अच्छा जी, आपके सामने मैं कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिख रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वर्ब वॉच. पास्ट टेंस वॉच्ड, past participle watched, progressive form watching, and present form that is called watches. There's one more verb that is called clean. Clean past form is called cleaned, past participle cleaned, progressive form cleaning, and present simple form that is called cleans. One more verb that is called play. Past tense played, past participle played, progressive form playing, and present simple form that is called plays. Okay, one more verb that is called invite. Past tense invited, past participle invited, progressive form inviting, and present simple form invites. Next verb that is called scold. Scold means डांटना. Past tense scolded, past participle scolded, progressive form scolding, and present simple form scolds. Let's go for another example that is called wash. Past tense washed, past participle washed, progressive form washing, and present simple form that is called washes. अब ये देखें कि यहाँ जितने मैंने verbs लिखे हैं, इसमें सब में एक बात सिमिलर है. वो इन तमाम फॉर्म्स ऑफ वर्ब में एक चीज सिमिलर क्या है कि तमाम के जो पास्ट सिंपल फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म जिसको आप बोलते हैं पास्ट टेंस और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो किस पे खत्म हो रहा है, वो ईडी पे खत्म हो रहा है.
तो मालूम चला कि अगर ऐसा वर्ब जिसके सिर्फ आगे ईडी लगा देने से या ये कह लें कि उसकी पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल जो है जो ईडी पे खत्म होती है, इस तरह के फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के वर्ब को बोलते हैं रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? यस, दिस इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। लेकिन अब यहां पे अब मैं आपके सामने कुछ और मजीद फॉर्म्स ऑफ वर्ब लेके आ रहा हूं, अब उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरी कॉमन वर्ब एवरीबॉडी नोज दैट्स कॉल्ड गो। अब गो की जो पास्ट फॉर्म होती है वो गोड नहीं होती, ना ही गेवर्ड होती है, कोई और नहीं होती, दैट इज कॉल्ड वेंट। पास्ट पार्टिसिपल गॉन, प्रोग्रेसिव फॉर्म गोइंग एंड प्रेजेंट सिंपल फॉर्म गोस। There is another verb that is called come. Come की जो past form होती है वो comed नहीं होती, that is called came. Past participle come, progressive form coming, and present simple form comes. Let's go for another verb that is called eat. Eat की past form eated नहीं होती, that is called eat. Past tense ate, past participle eaten, progressive form eating, and simple form eats. Let's go for it. खा लिया, अब पी भी लेते हैं, that is called drink. Drink basically is a irregular verb. क्यों? जब हम past form बनाते हैं तो कभी भी आपने drink कभी नहीं बोला, आप हमेशा क्या बोलते हैं? drank. Past participle drunk, progressive form drinking, and present simple form drinks. इसी तरीके से write means लिखना। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आपने राइटेड कभी नहीं बोला, हमेशा क्या बोलते हैं? राइट की जो पास्ट फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड रोट। पास्ट पार्टिसिपल रिटन, प्रोग्रेसिव फॉर्म राइटिंग, एंड सिंपल फॉर्म दैट इज कॉल्ड राइट्स। लेट्स गो फॉर अनदर एग्जाम्पल ऑफ इर्रेगुलर वर्ब, डू। डू मीन्स कोई भी काम करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आई डू माई वर्क, you do your work and I do my work, we do our work, whatever, right? But लेकिन जब हम उसकी बात करते हैं past form में तो कभी भी हम doed नहीं बोलते हैं, we always say that did. Did is the past form of do, and past participle is called done. I have done my work, you have done your work, and progressive form that is called doing, and the present simple form that is called does. Let's go for another irregular verb. उस irregular verb को देखते हैं और मजीद क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड गेट। These are the very common verbs, we usually use it, right? And get का मतलब क्या होता है? हासिल करना भी होता है और मीनिंग भी होते हैं। Get की जो पास्ट फॉर्म होती है वो getted नहीं होती, that is called got. इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल है वो got ही होती है। आप चाहे तो उसको ब्रिटिश इंग्लिश वाले इसको gotten भी बोलते हैं। Both are same, there is no difference at all. But again, get, got, getting and gets. तो ये get है ये भी क्या है? This is also called irregular verb. Let's go for another street verb. What we learned that was have. Have means ownership, illness, relationship, characteristics. If you remember in the last few classes back, we learned it. Okay, so ये have है basically ये have नहीं होता. That is called had. Past participle had, प्रोग्रेसिव फॉर्म एक्शन में जब इस्तेमाल करता था वो इस्तेमाल होती है, दैट इज कॉल्ड हैविंग, और इसकी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म क्या होती है? हैज होती है। तो इस तरीके से पता लगा कि जो हमने हैव पढ़ा था वो भी क्या होता है? बेसिकली दैट इज कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। ओके, अब इस तरीके से मैं बता दूं कि पूरी डिक्शनरी में तो बहुत हजारों के तादाद में जो है वर्ब्स हैं, लेकिन इनमें से जस्ट 281 वर्ब्स कौन से होते हैं? वो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। लोग समझते हैं कि बहुत सारे होते हैं, 281 verbs हैं जो कि irregular हैं। अब आपने काम क्या करना है? What you are supposed to do, एक पेंसिल और एक अपना रजिस्टर जो आप लेके बैठे सुकून के साथ, अब आप एक काम करना शुरू करें। आपको मैं टास्क दे रहा हूं कि दिस इज योर टास्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, कि आप अपने काम ये करना है कि आप इस क्लास के बाद जो है एक पेपर लेके बैठना है और उसमें अपने जहन से जितने आपके जहन में जो है वो irregular verbs आ रहे हैं आपने उनको लिखना शुरू करना है। अच्छा, one thing is more,
कि अब लोग कहते हैं सर हमें डिक्शनरी में कैसे पता लगे कि कौन सा वर्ब रेगुलर है या कौन सा वर्ब इरेगुलर है। इसका भी आंसर आपको दे देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में जो वैसे तो बहुत सारी डिक्शनरीज हैं, लेकिन इनमें से सबसे फेमस डिक्शनरी है दैट इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी। ये एक ऐसी डिक्शनरी है कि डेफिनेटली दैट उस पर हर कोई एतमाद रखता है और डेफिनेटली बड़ी एडवांस लेवल की है। अब आपको इसकी जो स्टेटस है, इस वीडियो के लिंक में मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा और आपने जिस पर क्लिक करना है, और अगर आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी है तो उसकी पहचान बता देता हूं कि कोई वर्ड जो अगर आप उसको आप सर्च करते हैं डिक्शनरी के अंदर, अब आमतौर पे क्या होता है कि वर्ब्स की जो फॉर्म्स हैं वो लिख के दी हुई होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप गो को सर्च करेंगे तो मीनिंग बाद में दिए होंगे, लेकिन पहले क्या दिए होंगे, उसके तीनों चारों फॉर्म्स जो लिख के दी हुई होंगी। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि उसके आगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिख के नहीं दी हुई होती। तो जिस फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे यानी जिस वर्ब के आगे फॉर्म ऑफ वर्ब लिख के नहीं दी हुई, तो आपको अंग्रेज ये मैसेज दे रहा है कि आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये रेगुलर वर्ब है। आपने सिर्फ इसके आगे ईडी लगा देना है, इसका मतलब रेगुलर वर्ब है और उसके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल आप इजी बना देंगे। लेकिन कोई ऐसा वर्ब जो कि इरेगुलर होगा वो मीनिंग बाद में देगा, लेकिन उसके पहले उसकी फॉर्म्स लिख के देगा। गॉट इट? सो अब वीडियो के जो हमारा जो इसका जो चैनल का लिंक है के कैप्शन में आपको उस डिक्शनरी का लिंक मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आपने जस्ट पे क्लिक करना है एंड यू कैन गेट। एंड एक और काम करें कि उस डिक्शनरी का लिंक जो है आप अपने बुक मार्क बना के रख लें और उस लिंक को सेव कर लें, ताकि जब आप कभी भी किसी वोकैबुलरी में आपको प्रॉब्लम हो, जस्ट क्लिक ऑन द वर्ब एंड यू कैन ऑल्सो गो डायरेक्टली ऑन द वेबसाइट एंड यू कैन ऑल्सो गेट योर even not only the translation but also the sounds. American English, British English, it is the big field of the English language, and without a dictionary a student is considered just like a soldier without a gun in the battle, right? So ये तरीकाकार है कि जब आपको इंग्लिश सीखने बैठे हैं तो आपके सामने डिक्शनरी लाजमी होनी चाहिए। Well, we are just going to summarize the class today. कि आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है, the topic what we learned that was called a regular verb and irregular verb. Regular verbs are those verbs which ends in the past tense, past participle, which ends in ed. That is called regular verb. And if the verb does not end in ed in past tense, past participle, that is called irregular verb. There are thousands of regular verbs, but there are only 281 verbs are here. They are called irregular verb. So it's your task to find by yourself. आप चाहें तो गूगल करके उसको पूरी लिस्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि पहले प्रैक्टिस करने से के लिए अपने जहन से थोड़ा सा, जितना आपके जहन में वोकैबुलरी रिकॉल होगी, आई एम श्योर दैट यू आर जस्ट गोइंग टू गेट मोर एंड मोर कमांड ऑन इंग्लिश, राइट? It's all about today's lecture in this channel and sharing with others as well, so other people they can also get the more command on their English and they can also make their English easy as we've been making your English easier, because the channel name is Easy English by Amir. It's time to say you goodbye until next lecture. Allah Hafiz.